What is the importance of time in your life, in our life? life. Time plays a vital role in everyone's life as इसमें क्या बोलेंगे मुझे आइडिया नहीं आ रहा. मैं दोबारा पूछूं? What is नहीं तो क्वेश्चन तो समझ आ गया मुझे आइडिया नहीं ना है मेरे पास क्या बोलूं. टाइम की इम्पोर्टेंस बताओ ना, कि भाई हम कहीं लेट हो जाएंगे तो हम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और एग्जाम में भी टाइम बहुत वैल्यू होता है। आज इवन आज जो मैं एग्जाम के लिए आई हूँ यहाँ, मेरे को टाइमली उठना पड़ा। अगर मैं नहीं आती तो मैं लेट हो जाती। ये एग्जाम्पल डाल दो या और कोई डाल दो। Time plays vital role in our lives and it is very important to reach somewhere on particular time. It's very it plays an imperative role to report somewhere at with punctuality as otherwise we may lose the opportunities. For an example, like I am here for the exam and if I would be late, I would be फिर क्या होता है अगर मैं पेपर में लेट जाती तो Yeah, if क्या I होता. don't take the time seriously, then I think I will miss the exam. And so Yes, that's why I time is think I really will miss the important, exam. ऐसे बोलो। Why do some people enjoy extreme sports? Well, it depends on person to person. Every individual have different interest. So some are more adventurous and some like to stay at home and play indoor games. So everyone have different taste. So that's why some people like adventure sports, extreme sports, or some people like to stay at home. मैंने तो दूसरा वाला पूछा ही नहीं एक ही पूछा है. Why do some people enjoy extreme sports? तो हमें उसी के बारे में बोलना है. इसमें लिखा हुआ है some people enjoy extreme sports because they are adventurous by nature. They get the thrill out of doing challenging sports. Some people also do it for money as there is a lot of money involved in such sports. एक ही के बारे में बोलना है. चलो. Are action films popular in your country? Definitely yes. Uh, in my country, action movies are really popular, and they are very much interesting and fascinating. People love to follow action pictures, and the series of Fast and Furious is quite famous in our country. My, For example नहीं बोला आपने. for example, okay. Do you think it is a good thing if a leader likes to take risk? Pardon? Do you think it is thing it is a good thing if a leader likes to take risk? Well, I think it's depend on person to person. If a leader is quite risk taking, then it's really depends on the result, I think so. And everyone will be get affected. So if it's uh, justify the risk to the outcome, and I think it will be benefit for everyone. If it's dangerous to take risk, then it's not a good option, and the leader should think accordingly. पता नहीं, गलत तो है। नहीं. मैं बना बना के बोल रहा था ना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ना ये। आइडियाज नहीं थे ना. एनीवेज पढ़ के देखते हैं इनका आइडियाज आ जाएंगे. Yes, I think it is good thing if a leader likes to take risk
somebody has to take somebody has to take the risk at times, and it is a lead. If a leader is taking a risk, that means he is accepting the responsibility that if something goes wrong, he is to blame for it. He is to be blamed for it. Blamed. Okay. People look upon such leaders who have the ability and the courage to take risks and do things differently. इन्होंने लिखा है कि जो लीडर रिस्क लेगा वो इस चीज को मतलब सोचेगा नहीं कि अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा नाम आ जाएगा. इट्स अ गुड क्वालिटी. इसको ठीक इन्होंने है. कैसे लिखा है? रॉन्ग by accepting the responsibility. इसको ऐसे लिखा है. चलो next. Do you think men and women will make a different choice about taking risk? No, I think both are same. They don't take different risk, or they are in a situation. Every risk is same to the person, and we know what the conclusion or outcome will be by taking that risk. So it's just about the opportunity and uh, the what we say, the क्या कहते हैं उसको, level of risk. क्या कहना चाहते हो आप? मैं कह रहा था कि मतलब दोनों का वो कुछ अलग नहीं होता. मतलब रिस्क तो मतलब ये है कि अगर जैसे दोनों लेंगे तो वो आउटकम पे डिपेंड करता है कि रिस्क मतलब लाइटली है या रिस्क जैसे लेवल क्या है रिस्क का. तो ये तो डिपेंड करता है रिस्क के ऊपर ना, कि किस चीज के ऊपर रिस्क रिस्क ले रहे हैं वो. और वो मतलब क्या रिस्क ले रहे मैंने हैं. सिर्फ ये पूछा है कि मेन और वुमेन जो है मतलब उनकी अलग अलग. चॉइसेस अलग अलग हैं रिस्क लेने में. आप रिजल्ट पे कैसे पहुंच गए? अच्छा, तो फिर यही कहेंगे ना कि जो लेवल ऑफ रिस्क है उसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये मैन और वुमेन का डिफरेंशिएट नहीं होता, सेम होते हैं. तो सिर्फ आप इतना बोलोगे कि nowadays the gender disparities are eliminated and it is quite equivalent for men and women to take the choices about the risk. ओके. बस इतना ही ठीक है. बोलोगे? एक मिनट होल्ड करो. ये क्या फ्री क्लास है? अच्छा मेरे लग गया बेटा 10 मिनट. ठीक है. हेलो. The next question is, what about the young and old? सेम है मतलब कि यंग और ओल्ड जो है वो रिस्क लेने के लिए कितने डिफरेंट चॉइसेस होती हैं उनकी, या वो सेमली लेते हैं? ओके. ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम. आपने मेरे से पूछी थी, आज मैं पूछ रही पूछा था ना ये मैंने. हूँ. मैंने ऐसे ही शफल किया था, ये वाला आ गया. चलो बोलो. What well about the young and old? well youngs are more energetic and more interested to take risk as compared to older, because they are quite uh, know, and they are quite knowledgeable and experienced, so they uh, What take do you want to say? The old ones do not have experience. They are dumb. अरे बुड्ढों मैंने ये कहा है कि उनके पास रिस्क होता है, तो उनके पास ऐसे एक्सपीरियंस और वो होता है, तो वो कम रिस्क लेते हैं, आपने और उनके लिए रिस्की भी ज्यादा होता है ना. नहीं. ऐसे एग्जामिनर पूछेगा अगर आप कहोगे कि जो यंग वंस हैं वो एक्सपीरियंस्ड है, अभी आपने ये कहा. नहीं, मैंने कहा तो ओल्ड वन आर एक्सपीरियंस और यंग वंस ज्यादा लेते हैं रिस्क एज कंपेयर टू ओके, ओल्डर वंस, बिकॉज ओल्डर वंस आर हैविंग मोर एक्सपीरियंस एंड मोर ये. सही है. नहीं.
बोलो पहले, बोलो फिर मैं आपको आगे क्वेश्चन पूछती हूँ। नहीं बताओ, मुझे आंसर बताओ, नहीं, आप क्योंकि पहले मेरा आंसर मतलब तो कंप्लीट, यही था। नहीं हाँ, आप पहले आंसर कंप्लीट तो करो। से कि यस, मैंने यही बताया। फिर उसके बाद था कि ओल्डर वन आर मोर एक्सपीरियंस एंड दे नो risk taking will be dangerous sometimes, so they think accordingly, and they don't take risk easily. ठीक है, तभी मैंने कहा था ना, आपकी बात समझ नहीं आई थी मुझे, अब आ गई। ठीक है। हाँ। हम्म, बोल सकते हैं ऐसे। वैसे हाँ। एक वर्ड भी बोल सकते हैं, दे द ओल्ड वंस डू नॉट हैव, दे आर, एक मिनट, they are not physically capable हाँ। to take the risks, as they are they are vulnerable towards taking risks. vulnerable बोलते वल्नरेबल का मतलब हैं होता है? इसको। vulnerable मतलब जो बंदा बेचारा होता है, जैसे कि वो ये काम कर नहीं सकता, वो बेचारा है। अच्छा। vulnerable कंडीशन ही होती है उनकी, फिजिकली वो हम्म। इतने वो नहीं होते, तो उसको vulnerable बोलते हैं, ठीक है।